The deadlock continues in the monsoon session of Parliament. Both the ruling government and the opposition party blame each other for the Parliament logjam. As a result, Parliament proceedings have shut down for the past couple of weeks. Despite several attempts, government failed to break the deadlock. Since the monsoon session started, government and the Lok Sabha Speaker have called 5 meetings, but to no avail. The Congress has dug in its heels, not allowing Parliament to function. Before the monsoon session started, government and Lok Sabha Speaker called for an all-party meeting, seeking the cooperation from the opposition to let the Parliament function. Later, Finance Minister Arun Jaitley too called for an all-party meeting, but the opposition didn't participate. Last week again, the government and the Lok Sabha Speaker called for a meeting, but the deadlock continues. From agreeing to an immediate discussion on all issues to agreeing to a statement on the Lalit Modi issue by Sushma Swaraj and even an intervention by Prime Minister Narendra Modi if the need arose, the government has gone till the last mile to ensure Parliament functions. I am only politely appealing to them, please understand the mood of the nation. People want Parliament to function, not overwhelmingly, 70%. People want Parliament to function. They want Parliament to function effectively. They want opposition to raise issues. They want government to respond to the issues and then sort out the issues in a democratic manner. Due to the logjam, several bills are pending, from land acquisition bill to GST. 11 bills are pending and 9 new bills are supposed to be introduced in this session. In the past 2 weeks, 91% of Parliament's time was wasted, with Parliament functioning only for 9% of the time. In Lok Sabha, around 1.5 crore rupees is spent on 1 hour of functioning, whereas 1.1 crore rupees is spent on 1 hour functioning of the Rajya Sabha. Around 260 crore rupees would be wasted if the monsoon session of Parliament fails to function properly, out of which 162 crores on the Lok Sabha and 98 crores on the Rajya Sabha. 2 days ago, Minister of State for Tourism Mahesh Sharma made a statement on no work, no pay. Protests were organized against his statements both inside and outside Parliament. कि कहाँ वर्क आएगा कहाँ पे आएगी, हम तो पे आए नहीं हैं, हम लोग कोई नौकरी नहीं कर रहे जो तनख्वाह दें, जनता की सेवा करने आए हैं. तो नो वर्क नो पे किसने लागू किया? और बीजेपी के जिस लोगों ने कहा या तो अज्ञान है या फिर दिमाग का खोखलापन है. किसी भी उदाहरण को क्रिएट करने के लिए, किसी उदाहरण को अगर जो है सामने लाना है समाज के, तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को भी सामने रखना पड़ता है. नहीं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या भारतीय जनता पार्टी है तो वो अकेले कैसे डिसीजन ले लेगी? इसके लिए तो इनको कोई कानून कायदे बनाने होंगे. तो ठीक है, वो लोकसभा में जरूर पास करा लेंगे, वहाँ उनका बहुमत है, राज्यसभा में कैसे करा पाएंगे? Ruling government feels that the matter should be debated in Parliament. At least some work will happen in the Parliament. वो सदन की गरिमा और सदन के सदस्यों की गरिमा का विषय है. और इस पर हम लोग सब लोग अपनी बात कहना चाहेंगे. हमारे उनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन सदन की गरिमा और सदन के सदस्यों की गरिमा को लेकर एक चर्चा होनी चाहिए. हम लोग सभी अपनी बात कहना चाहते हैं. Later on, Mahesh Sharma clarified that it was his personal view. मेरा ख्याल है कि मेरा स्टेटमेंट सभी ने अगर ध्यान से देखा हो तो मैंने ये कहा है कि ये सुझाव आया है कि अगर एक मजदूर को तनख्वाह नहीं मिलती काम करने ना करने पर, तो पार्लियामेंटेरियंस को भी नहीं मिलनी चाहिए. मेरा वक्तव्य था कि ये सुझाव आया है और उसके लिए मैंने कॉरोलरी ये कहा था कि ये मैं अपने इस वक्तव्य पर अभी भी कायम हूं कि ये सुझाव आया है कि ऐसा पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी हो. Parliament logjam has cost the country heavily. The ruling government is pursuing the opposition to end the logjam by holding a debate, but the Congress party is not agreeing to it. With Parliament team inputs, Newsnight Desk, DD News.